Hello friends, I am Dr. Sachin Bhonsle from Fortis Hospital, Mulund. I am a senior consultant orthopedic and joint replacement surgeon. Today we will talk about osteoporosis. आज हम बात करेंगे osteoporosis मतलब हड्डी कमजोर क्यों हो जाती है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हड्डी में होता है कैल्शियम, bone contains lots of calcium which is a bone mineral and bone mineral density is calculated by doing a DEXA scan. लेकिन हम जब पेशेंट क्लिनिक में देखते हैं तो हमें पता चलता है पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, उनके एक्सरे में क्या दिखाई दे रहा है. सो वी सस्पेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस बाय लुकिंग एट द पेशेंट इवन बिफोर द डेक्सा स्कैन. व्हाई ऑस्टियोपोरोसिस इज सो इम्पोर्टेंट? थोड़ा सा गिर जाने से विद अ ट्रिवियल ट्रॉमा वन कैन सस्टेन अ फ्रैक्चर. पीपल सस्टेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. रिस्ट फ्रैक्चर, शोल्डर फ्रैक्चर, बट वर्टेब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, या हिप जॉइंट, हिप का बॉल टूट जाता है, देयर इज अ हिप फ्रैक्चर. दीज टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स आर मेजर फ्रैक्चर्स एंड they take months to recover. Often there is a surgery required and the outcome of the surgery is not always good because the patient is weak, patient can become bedridden and they never recover their strength back. तो हम ये देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है. सो हाउ वी कैन अवॉइड ऑस्टियोपोरोसिस ऑल टुगेदर और पार्टली. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. नंबर वन कि हमारे हाथ में जिसका कंट्रोल नहीं है, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जो कि है हमारा एज. एज वी गेट ओल्डर आवर बोन्स बिकम वीकर एंड वी डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस. दूसरी चीज है हार्मोनल स्टेटस. All ladies around age of 50 or 60 develop menopause, hormonal changes आते हैं और उसके वजह से osteoporosis set in हो जाते हैं. नंबर 3, there are so many diseases, जैसा किसी को rheumatoid arthritis होता है, for that steroid has to be given. Somebody has epilepsy, for that certain medications have to be given, which eventually lead to osteoporosis. And these are the three factors which are not in our control. But still we can avoid osteoporosis by doing certain things. I will come to that later. सबसे important है कि इसमें modifiable factors क्या है, what factors are in our own control. So these are the factors which are very important to avoid osteoporosis, which is number 1 is a lack of calcium and vitamin D in the diet. Poor diet. अच्छा डाइट रहना बहुत ज़रूरी है हड्डी के हेल्थ के लिए. Number 2, our exercise status. If we are not exercising at all, having poor diet and sitting in one place, so we will develop osteoporosis. Number 3, alcohol and tobacco and drug abuse. There are certain type of medication और tobacco और alcohol हड्डी को कमजोर कर ही देता है, guaranteed. So these are the 4 or 5 modifiable factors. If we get rid of these factors from our life, it is possible to avoid osteoporosis and enjoy a long life with strong bones, with good mobility and pain-free joints. तो osteoporosis treatment कैसे करते हैं? हम पेशेंट्स को जब क्लिनिक में देखते हैं तो हमें पता चलता है किसका लाइफस्टाइल क्या है, किसकी हड्डी कितनी कमज़ोर है. सबसे पहले तो हम we start them on calcium, vitamin D, tell them to take weight bearing exercises. Weight bearing exercises is skipping, walking, running, jumping. Not possible for everybody. Yoga and swimming are not weight bearing exercises. They will not help your bones. They will help your joints only. Number 2, calcium vitamin D levels हम कभी-कभी check करते हैं. We give them supplements. Third thing is when the patient has got severe osteoporosis, we see if their steroid dose can be altered. Do they really need steroids? Can we stop their steroids? Modify other medications. Number 3, osteoporosis treatment के protocols होते हैं. माइनर ऑस्टियोपोरोसिस को एक हफ्ते की एक गोली देके ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हैज टू बी ट्रीटेड विद सर्टन इंजेक्शंस which are very easy to take, which can be stored in the fridge. The pen can be taken out of the fridge and the injection taken every day. And osteoporosis treatment goes on for life.
ऐसा नहीं कि 6 महीना 8 महीना 1 साल गोली ले लिया उसके बाद वो ठीक हो गया उसके बाद ट्रीटमेंट बंद कर दिया. So it is important for you to know your lifestyle, take a good diet, do the exercise, follow your doctor's advice, and to treat the osteoporosis. Thank you.